So today's agenda is first to invite a speaker on the stage, lighting of the lamp by the speaker, then Sri Omkara and Pratana by the students, then Pracharya of the speaker plus welcome address by Mr. Shivamso Chikro, and then felicitation of Manani Hanumanta Raoji. Then the next program followed by significance of the program by Udhiji. Then Vivek Vichar, Wangno Lobang Bhai. Then we will have today's keynote Vimarsh that will be joined by Manani Hanumanta Raoji. After which there will be interaction session and followed by vote of thanks by Dr. Kadamurthy. And then in conclusion will be Shanti Mantra by the students, followed by the photo session. And then one announcement I would like to make here is that there is a book exhibition from backside to that and also outside. So those who are interested can link to the books if you are interested. So let me begin with today's program. First, I would like to invite at home Sri Hanumanta Raoji on the dais, on the stage. Give a big round of applause. Then second, followed by lighting of the lamp by the speaker. Next, I would like to call upon Sri Shivamso Chikro for Parichi of today's keynote speaker and also to give welcome address. So, upon good evening and welcome to all of you. Namaskar. So, as per agenda, let me begin with the introduction of our honorable speaker. He is none other than Mananya Hanuman Raoji, Jivanrati since 1982. Won by his inherent national urge, he joined Kendra in 1982
He is basically from Hyderabad. After completing his graduation in mathematics, he directly devoted himself to the life of Seva. Soon after training, he was posted to Vivekananda Puram at Kanyakumari, and he was in charge of all camps held in Vivekananda Puram. He became secretary of Vivekananda Kendra Prakashan Trust at Chennai, then became secretary of VKVs in Andaman and Nicobar Island. In 2009, he became an administrative secretary at Vivekananda Puram, Kanyakumari, and from 2010, he was All India Treasurer. He is a voracious reader of literature relating to Gita, Sri Ramakrishna, Shraddha, Swami Vivekananda, Aurobindo, and Shankaracharya. His lectures are punctuated with quotations from various scriptures. He is a very good yoga teacher. Presently, he is All India Vice President of Vivekananda Kendra, Kanyakumari. Thank you. Once again, welcome you all to today's program. So at the outset, I would like to welcome our Honorable Pradesh Speaker, Mananya Hanuman Raoji. Thank you very much for being with us today, and welcome to Arunachal and the Vivekananda Kendra Itanagar, or Vivekananda Kendra Vidyalaya Itanagar, for gracing this occasion. We are very blessed by your presence out here. Thank you. Secondly, I would like to welcome Rupesh Mathurji, Pran Sangatak and Joint Secretary, Vivekananda Kendra Arunachal Pradesh Trust. Over here in our midst to attend this program, and he's the main foundation over here who's really guiding us from the back or from the above, I would say. Okay, welcome Rupesh Bhayaji. Next, I would like to welcome, no doubt they are our family members, but still, on behalf of Vivekananda Arunachal chapter, I would like to also welcome Sri A. Krishnan, Principal, Vivekananda Kendra Vidyalaya Itanagar, for being with us for this program. And next we have, I would like to welcome Sri Taba Tatupji, VKB Alumni Association, Chairman. And then besides, I would like to extend my hearty welcome to all other dignitaries that which I did not get the list, sorry, please forgive me for that, so that I'm not, because I'm not attending you in person to address the welcome. Alright, so sorry for that, so I would like to welcome you all together. So welcome you to our program, the first Vimarsh program that we have here. And then I would like to also thank you all for giving your precious time to spend with us for tonight, for an hour, most probably. And all the teachers of VKB Itanagar, Karyakartas, and then I would also like to welcome our Dr. Lingisa, who is present here. So sorry, not Lingisa, sorry, extremely sorry. Dr. Mika Umpo, who is a senior doctor, alright, who is present in our midst. Welcome, sir. And then I would like to also welcome our student friends, those who have performed this, the mantra, the welcoming mantra or the initiation mantra. Welcome to all of you, my student friends.
for being here. And then really this is very important program, I would say, to be with all of you, those who are the ones really doing great in our respective field in wherever we are, and then you have been a source of inspiration and a source of energy that the Arunachal Trust is with. And then today I would like to welcome you all for this Vimarsh program. That the very topic is the New India. So I hope that all of you will be enjoying the deliberation. The deliberation on the New India, the theme New India by our Honorable Speaker, Mananya Hanuman Raoji. I hope you all will enjoy, and thank you very much. Now, the next program is for the felicitation of Mananya Hanumanta Raoji, for which I would like to call upon Sri Taba Tatukji, Chairman VTV Alumni Association. May do the honor kindly. Now, I would like to call upon Sri Rupesh Ji to give deliberation on today's program, particularly with the significance of today's program on the Vimarsh. It's organized by Vivekananda Kendra Kanyakumari, Itanagar branch. अरुणाचल प्रदेश में पिछले 45 ईयर से ज़्यादा कार्यरत है. Since I can say 74, when our present president Balakrishnan ji came here in Arunachal Pradesh in 1974. Since that time, Vivekananda Kendra started working here. और तब से कार्य करते हुए अलग अलग प्रोजेक्ट्स के माध्यम से अरुणाचल में अपना कार्य शुरू हुआ है, जिसमें विवेकानंद केंद्र विद्यालय 1977 जो एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन के लिए शुरू हुए, उस समय जब शुरू हुए 7 थे और आज 42 विवेकानंद केंद्र विद्यालय पूरे अरुणाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं. देन 1993 में विवेकानंद केंद्र अरुणज्योति प्रोजेक्ट शुरू हुआ. सबने मिलकर ऐसा विचार किया कि विवेकानंद केंद्र विद्यालय में तो सबको लाया नहीं जा सकता है, पर विवेकानंद केंद्र का जो मोटो है मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, इसके माध्यम से पूरे समाज को, पूरे अरुणाचल को और जोड़ने के लिए एक अच्छे कार्य में अपना समय देने के लिए, आह्वान करने के लिए अरुणज्योति का कार्य शुरू किया, जो मुख्य रूप से फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. इसलिए यह जो विवेकानंद केंद्र अरुणज्योति प्रोजेक्ट जो है वो युवाओं में, महिलाओं में, कॉलेज में, फिर सारी जो अपनी बस्तियां हैं, आज अरुणाचल में अराउंड 3070 विलेजेस हैं. आउट ऑफ दैट वी हैव रीच्ड अराउंड 1500 विलेजेस इन ऑल ओवर अरुणाचल प्रदेश. तो ओवरऑल विलेज का डेवलपमेंट के लिए विलेज में मेडिकल और एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन का काम अपना चल रहा है. तो ये 1993 में शुरू हुआ. उसके बाद में विवेकानंद केंद्र का जो अपना एलुमनाई एसोसिएशन का कार्य शुरू हुआ, जो एलुमनाई बीकेवी से पढ़कर और आज पूरे समाज में
कार्य कर रहे हैं। आप सभी बहुत लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं, उनके बारे में मालूम है। तो विवेकानंद केंद्र ने किस प्रकार से यहाँ कार्य किया, उसका जो प्रोडक्ट के रूप में बीके एलुमनाइज को देखा जाता है, तो उनके एसोसिएशन के रूप में एक कार्य शुरू हुआ। चौथा जो कार्य विवेकानंद केंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर के माध्यम से शुरू हुआ, जो कि अपना अरुणाचल का जो रिच कल्चर हेरिटेज है, इसके बारे में जो लोग अपने को ही भूलते जा रहे हैं, फिर से याद दिलाने की दृष्टि से, रीएम्फसाइज करने के लिए, और आज की दृष्टि से अपने कल्चर ट्रेडिशन को हम कैसे आगे लेके जा सकते हैं, इसके लिए विवेकानंद केंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर का अरुणाचल प्रदेश का चैप्टर शुरू किया गया, और उसके माध्यम से पूरे अरुणाचल में सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए गए, जिसमें थीम था ट्रेडिशनल सिस्टम चेंज एंड कंटिन्यूटी। अपना जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको समय के साथ चेंज भी करना है, बट इट शुड बी कंटिन्यू। अपने रूट्स को रखते हुए कैसे हम अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए सेमिनार और सिम्पोजियम ऑल ओवर अरुणाचल प्रदेश में अराउंड 13 ऐसे सेमिनार और सिम्पोजियम ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं, और उसके आधार पर ऑथेंटिक बुक्स पब्लिश भी किए हैं। ये सेमिनार की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं या जो लिखते हैं वो अपने ही कम्युनिटी के लोग होते हैं, जिस कम्युनिटी में यह प्रोग्राम या सेमिनार किया जा रहा है। तो जब अपने ही कम्युनिटी का व्यक्ति अपने बारे में लिखता है, वो ज़्यादा ऑथेंटिक होता है, सही होता है। तो उस समय से लेकर सिंस 2003 यह इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर का काम शुरू हुआ, और आज पूरे अरुणाचल में यह कार्य चल रहा है। यह विमर्श का जो कार्यक्रम है, यह हम अभी एक और नया शुरू कर रहे हैं। इसका मेन थीम है कि विमर्श के माध्यम से, विमर्श मतलब एक अच्छी चर्चा, विशेषण चर्चा मतलब एक विशेष चर्चा, जिसके माध्यम से जो भी इस चर्चा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबका जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, वो एक आगे की ओर बढ़े। वी कैन से एज ए पॉजिटिव डायरेक्शन में एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए एक ऐसा इंटरेक्शन और चर्चा, जिसमें एक व्यक्ति उस सब्जेक्ट को इनिशिएट करते हैं, और इनिशिएट करने के बाद में उस विषय के ऊपर में कैसे हम, जैसे आपका टॉपिक है द न्यू इंडिया, अपने भारत को लेकर हम क्या सोचते हैं, क्या भारत का भूत भविष्य और वर्तमान चल रहा है, इसमें अभी हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है आगे लेके जाने के लिए, इस विषय को आपके सामने रखा जाएगा। और उसके बाद इंटरेक्शन का प्रोग्राम है, दैट मीन्स क्वेश्चन आंसर भी हो सकता है, या आप कुछ उसके बारे में बताना चाहें तो वो भी बता सकते हैं। ज़्यादा नहीं, एक 2 से 5 मिनट में अपने विषय को आप बता सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन जो वक्ता यहाँ पे उपस्थित है आप सब उनसे कर सकते हैं। तो यह जो चर्चा है ये पॉजिटिव चर्चा हो, और अपना सभी का अंडरस्टैंडिंग, अपना नॉलेज, इंफॉर्मेशन एक पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 या 2 कदम आगे की ओर बढ़े, ऐसा ये विमर्श का उद्देश्य है, जिसमें आप सभी आए हैं। मुझे लगता है कि यह जो विमर्श का कार्यक्रम है, इसमें जो विषय रखा जाएगा उसको सबको आप समझते हुए, और उसके बाद में क्वेश्चन यदि है तो वो, या आपको यदि उसमें कुछ ऐड करना है तो 2 से 5 मिनट में आप अपनी बात को रख सकते हैं। इस प्रकार का यह विषय है, यह अच्छा रहेगा ऐसी आशा है। So in fact, quite thought-provoking speech and deliberation we got. Now next program I would like to call upon Wangno Lobang Bai to give deliberation on Vivek Vichar. So please, I call upon Wangno Lobang. Let New India arise, let her arise out of the pigeon's cottage, grasping the cloth, out of the huts of the fishermen, the cobbler and the sweeper. Let her emanate
fact, it was quite good Vivek Vichar by one. Now, next program, before going on address by the speaker, I would like to give some deliberation on the topic Bharatvarsha. So today's the very concept topic, the New India, organized by Vivekananda Kendra Kumari Itanagar branch. So herein, the very topic on the Vimarsh, it gives the concept of New India. So now, all the members present over here, and I'm being from history background. I have made jotted down some points to conceptualize the very context of what is Bharat, the very concept and the term of Bharat. Then beside this, the synonyms of Bharat, the India and Hindustan, how it had evolved in course of time, this name, how it had derived. So in this context, historical perspective, I'm going back. So now, the name Bharat or Bharatvarsha, this country, India, is said to have derived the name from the name, of either Dushyant and Sakuntala's son, Bharata. So Bharat was the lineage, he was the son of King Dushyant and Sakuntala. Sakuntala was the daughter of sage Vishwamitra. Besides this, the Sanskrit word Bharata is a derivation of this Bharata, which was originally an epithet of the very name Agni, of fire. The term is verbal known of the Sanskrit root, from where this evolved as Bharata. Then beside this, you see the realm of Bharata is known as Bharatvarsha in Mahabharata. Dushyant and Sakuntala's son, Bharata, the reference is there in the battle of 10 kings in Rigveda, the battle of 10 kings. And in that, the Bharata tribe emerged victorious. And hereafter you find the lineage, even in Mahabharata, the Kauravas and Pandavas, they were the descendants of Bharata, King Bharata. And here, according to the text, the term Bharata is derived from King Bharat, who was the son of Dushyant and Sakuntala. Now the synonyms of Bharat, our country, India, how it can derive what the name India. The English term is from Greek word actually. When you find Chandragupta Maurya during his reign, there was an invasion by the Greeks, and Seleucus Nicator, who was the general of Alexander, was being defeated by Chandragupta Maurya. And thereof, you find after the battle, Greeks have sent their Greek ambassador in the court of Chandragupta Maurya. And within this Greek ambassador, his name was Megasthenes, who have done excellent work on the modern empire, the modern administration, and the socio-economic and political conditions during modern period of Chandragupta's reign. So he have written a book known as Indica, and India have derived the name from the very word Indica, a book written by Megasthenes. In India, we are letting transliteration India, the name derives ultimately from Sanskrit Sindhu. Sindhu river, which was named as Indus river, because there's a misnomer of the pronunciation of some of the wordings, like what we call chai in Hindi, and when you go to Assam, you pronounce sai. Unlike this, the Sindhu river was being pronounced as from the Sindhu river, they have pronounced the Sindhu river as Indu, and from Indu, it derived the name Indus river in course of time. And there's also references, the old Persian equivalent of Sindhu was Hindu, and there is one called Sindh in about 516 BC, whereupon the Persian equivalent Hindus was used for the province at the lower Indus Valley. The people, those who are residing the other side of river Indus, the Sindhu they pronounce, from Sindhu it derived the name Hindu. And from there you find the very name Hindu and the place Hindustan, Hindustan. And here, dwelling something more on the very context of this very word, Latin word India.
is used by Lucian, and India was known in Old English language and was used by King Alfred's translation. And during medieval period, you find in Middle English the name was under French influence, replaced by Hindi or Indi, which entered early modern English as Hindi, and the name India then came back to English usage from 17th century onwards, and maybe due to the influence of Latin or Spanish or Portuguese. But we find the very word India came back to English usage from 17th century onwards. Now, besides this, dwelling something on the very word of Hindustan, or more detail, slightly, just cut short my time. The words Hindu came from Indo-Aryan Sanskrit language, Sanskrit words Hindu for the river Indus and its region, Indus region. And then you find there is one have conquered Indus Valley in about 516 BC, upon which you find the very words Hindu and Hindus. And from this Hindus you find the Hindustan, the name had been derived. And Hindustan as the term, Hindu itself entered this very language in 17th century. And now, furthermore, you find the Constitution of India, which was framed after a long debate in the Constituent Assembly, ratified on 26 November 1946 and became very effective since 26 January 1950, clearly outlines in the very first article of Part 1 of the Indian Constitution about the identity of our nation as India, that is Bharat. So this is something about the deliberation on the very word Bharat, and synonyms of Bharat, India and Hindustan, Hindustan. And today's topic we are very relevant in this context, that we are very delighted to have very learned Mananiya Mahamanta Raoji, who will be dwelling on the interaction session on the topic the New India. So may I call upon Mananiya Hanumanta Raoji for his keynote speaker, as a keynote speaker, and to give deliberation, as an address by the speaker. I request him to kindly the honor of deliberation. I'm very happy to be here. आप सबके बीच में इस अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी ईटानगर की आदरणीय, पूजनीय और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के बीच में विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी से इस भारत की 75 वर्ष अमृत वर्ष के संबंध में और विवेकानंद केंद्र का जो 50 वर्ष है उसका संबंध में, और ये अभी जो अमृत काल जो है 75 से आने वाला 100 साल 25 साल आने वाला है, इसका बीच में हम द राइज ऑफ इंडिया, वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट का अच्छा बिंदु अपने सामने रखा है, और इस बिंदु से ही पुलकित होना ओतप्रोत से ऐसा एक विषय अपने सामने है, द थिंकिंग माइंड्स हाउ टू थिंक, द कॉन्टेम्पलेटिंग माइंड्स हाउ टू कॉन्टेम्पलेट, द फोकसिंग माइंड्स हाउ टू फोकस,
The coordination of the wills must coordinate. A normal subject, a common subject, मेरा भारत, हमारा भारत, our India. When we talk about this, there is a need to analyze, there is a need to understand, there is a need to share, care, love this nation. The land in which we are born, the soil in which we are born, the culture in which we are born, the community in which we are born, the society in which we are born. Please remember it's a wonderful, important dimension. I always say, one of the journalists of the newspaper called The Hindu, very popular in southern India, that journalist Mr. Sinha asked Swami Vivekananda, beautiful question. He asked Swamiji, what should be our attitude towards our nation? एक जर्नलिस्ट पत्रकार स्वामी विवेकानंद अमेरिका से लौटने के बाद आफ्टर स्वामी विवेकानंद returned to India, Swami has been around about 4.5 years. When he returned to India, two wonderful incidents took place. One incident was when he landed at the Rameshwaram. When Swami Vivekananda landed in the Rameshwaram by ship, he touched the soil of India. He said that every speck and dust of this land is a pilgrimage to me. A person who went round the world for about 4.5 years, when he returned to India, his first reaction was, this land is a pilgrimage to me. Every speck and dust of this land is a divine to me. The respect and the honor, to my motherland is doubles. We are talking of the new India. And when Swami Vivekananda was taken into the Maharaja of that times, the Ramanatha Prabhu, the Maharaja removed the horses. When he dragged Swami Vivekananda's carriage, horse carriage, he said, this man, this Swamiji, please listen, this Swamiji, this man, the Swami Vivekananda, has shown to the world the strength of India. He has shown to the world the strength of India. भारत का शक्ति, भारतीयता का प्रज्वलित शक्ति है. ऐसा भारतीयता का शक्ति, the power of India. This Swamiji has shown to the world. पूरा विश्व को भारत क्या है? पूरा विश्व के सामने भारतीय सनातन धर्म क्या होता है? पूरा विश्व में भारत का योगदान क्या होगा? अरे the future of India is defined by Swami Vivekananda. The future of the world is defined by India. These are the words used. The future of India is defined by Swami Vivekananda, and the future of the world is defined by India. The vision of Swami Vivekananda, that India will lead the world. It will be a Jagat Guru. The India will teach the world. Sri Ramakrishna Paramahamsa said, Naren, it was not Swami Vivekananda, Naren will teach and lead the world. And Swamiji said, the future decades and the generation, India will be the leader of the entire world. The fueling power, the energy behind the world progress will be India. When it is said, when Swami Vivekananda says, the fueling power, the fueling energy of the progress of the world is India, means what? The Indian thought, the Indian society, the Indian ethos, the Indian principles of work, the Indian principles of development, the Indian principles of progress. What is that? What is this? To understand what are these principles, a little bit of analytical side को थोड़ा सा पीछे जाके हमारा भारत की विशिष्टता था
India was a leader in many of the things, whether it is the spices and the textiles, whether it is the mathematics of India, whether the science of India, whether the astronomical principles of India, whether the Archimedes, financial principles of India in the form of Chanakya's Arthashastra, the nuclear science of India in the form of Canada, the algebraic principles of India in the form of Sankhya Shastra, the chemistry of India in the form of Nagarjuna, the Brihat Vimana Shastra of the Bharadwaja. The giants have fueled this nation. We have examples for that. But what is the blunder? Why do we feel this is an important dimension? A nation is defined. एक राष्ट्र, एक देश, एक nation is always defined by two principles, two dimensions. One is by the geographical limitations, geographical rekhain. A nation is defined as understood and seen by the geographical limitations, by geographical boundaries. India is bounded by, there is geographical maps are put. Oh, Kashmir to Karyakarta, Arunachal Pradesh, from Kaho to the say Kutch. The geographical boundaries. The map is put, the lines are drawn. Physical boundaries, geographical boundaries. The nation is defined, right? But it is not only self geographical limitations, mythical limitations. India is not only India. India is not just rivers, mountains and forests. India is not just a group of people. India is not just a conglomeration of states. What is this Bharat? Beautifully, the union of India is the union of its cultural variation. This is very important. Swami Vivekananda finds out wonderfully, the union of India, the unification of India, भारत की संगठित शक्ति कहाँ है? भारत की संगठित शक्ति, भारत का संगठित शक्ति इस भारतीय संस्कृति का संगठन में है. The cultural unification, the religious unification of India, Swami Vivekananda proposes. This is the proposition of Swami Vivekananda presents to India that if India is united, if Indians are to be united, the progress of Bharat, the development of India, if India has to be united to India, if India has to be powered back to India, the progress where the work should start and where the work should end, and on which India should depend. भारत की शुरुआत की काम, इस regeneration of India's काम कहाँ होना चाहिए? Beautifully, Swami Vivekananda says the work has to be based on the religion in English and what we call in Hindi and Sanskrit, it is to be a dharma based. The progress and the development has to be based on the dharma. The progress and development
व्यक्ति बनना है, ऐसा मेरा लक्ष्य है, आपका आधार क्या होना चाहिए? It should be on the goodness, means my प्रतिष्ठता, whatever it is, my greatness and honor and respect is on the sharing of everybody's responsibility. It is not at the cost of the others, but at the benefit of the others. Principle is to be underlined. It is not at the cost of the others, but at the benefit of the others. I should earn money. Okay, मैं पैसा कमाना चाहिए, but आपका पैसा कमाने में 10, 20, 100, सैकड़ों लोगों का गला नहीं पड़ना चाहिए। मेरा पैसा कमाना में 1000 लोगों का अभिवृद्धि होना चाहिए। मेरा पैसा कमाना में लाखों लोगों का उपयोग होना चाहिए। मेरा पैसा कमाना में लाखों लोगों का लूटना नहीं चाहिए। See the difference? Not at the cost, but at the benefit of the others. Conviction of the powers of goodness. भारतीय डेवलपमेंट प्रिंसिपल की बेसिक है। आपको अच्छा इंडस्ट्रीज बनना है, अच्छा डॉक्टर बनना है, अच्छा लॉयर बनना है, अच्छा बढ़िया कॉन्ट्रैक्टर बनना है, लाखों हजारों करोड़ों रुपया कमाना चाहिए, कमाइएगा, but it should be beneficial to the others, but not at the cost of the others. See the principle laid down by Swami Vivekananda. मेरा कमाई सभी का उपयोग में आना चाहिए, but not at the cost of, I will repeat once and close down this beautiful point, not at the cost of the others, but at the benefit of the others, which means that somewhere कहता है conviction in the powers of goodness. Goodness की definition है, benefit of the others is goodness and the cost of the others is badness. मेरा रोटी का कमाई, मेरा चावल का कमाई, मेरा दाल की कमाई, इस कमाई का पीछे लोगों का उपयोग पड़ा या लोगों का लूट लिया, बस one difference. If you are looting, cheating, it is badness, and if it is beneficial to the others, it is goodness. Simplify. And second point, Swami Vivekananda's presentation to all of us, for man and the nation to be great, is absence of jealousy and suspicion. असूया नहीं रखना, द्वेष नहीं रखना, ईर्ष्या नहीं रखना, अपना समाज में, अपना गांव में, अपना कम्युनिटी में, अपना जाति में, अपना फैमिली में, अपना देश में, अपना राष्ट्र में, किसी एक व्यक्ति में उभाल के आ रहा है, डेवलपिंग फास्ट, हेल्प हिम टू डेवलप, डोंट पुल हिम डाउन। उसका पैर खींचने के लिए मदद में, खींचने के लिए ट्राई में करना चाहिए, उसको मेरा कंधे पे रखकर उठाने की कोशिश। Never have this feeling of the jealousy. See the principles and the practical dimensions Swamiji was presenting for India to be great. Absence of jealousy. अपना ऑफिस में, अपना स्कूल में, अपना बैंक में, in our own professional directions, in our own professional community, अपना गांव में, अपना बस्ती में, अपना राष्ट्र में, when people are developing, when they are coming up, rising, help them to come up. Never try to pull them down. इनसे खींचने के लिए कोशिश नहीं. Absence of jealousy and suspicion, and wonderful. The third principle of Swami Vivekananda puts it is helping all those who are trying to be and do good. पढ़ाई में अच्छा है, काम में अच्छा है, पंक्चुअलिटी में अच्छा है, कमाई में अच्छा है, सेल्स में अच्छा है, पेंटिंग में अच्छा है, सिंगिंग में अच्छा है. Anybody who is becoming expert, master and perfect in his own field, try to help him more. अरे ये मेरे से ज्यादा है, खींचो इसको पीछे.
हियरिंग और क्या बोलते हैं बधिर, they cannot hear. ऐसा एक स्कूल में गया, deaf and dumb स्कूल में गया. इस deaf and dumb स्कूल में running race was put. Abdul Kalam quotes in his beautiful book Wings of Wars. जब people are running 1, 2, 3 and they don't run. These children are running. One child fell down. When one child fell down, others did not run. और वो रुक गए, पीछे गया, उस गिर गया, उसको पकड़ लिया, सब लोग हाथ पकड़ के दौड़ा. You understand the principle? गिर गया, छोड़ो यार, हमको लगेगा. It's not that. He fell down. It is our responsibility and duty to see all together how सब लोग मिलकर जीतेंगे. This is the principle beautifully given, and this was the principle of India. This is Bharatiyata. It is not at the cost of the others. And Vivekananda, this is the internal production and development, protecting the nation, the boundaries of the nation. Defense is there, army is there, I will come to that. And protecting the internal dimension of the nation, cultural dimension, wonderful. The communal
Vivekananda, Swamiji, Vivekananda, you want India to be like that? Swamiji said, no, never. We should see the love of Swami Vivekananda. India is India. We have some minus points, but we have plus points. Harm the plus points. Correct the negative points. 75 years of India's independence. How we got back 15th August 1947. What was Indian condition? Whether it is defense, whether it is industries, whether it is finance, whether it is agricultural development, whether it is aerospace management or industries or the finance or agriculture. Just go back and look at it. What is now presently? All of us should be proud. गर्वी के कारण है a nation which was, I will not use some names, but you may be knowing, a nation who has to buy money from the World Bank, putting Indian gold in the World Bank 30 years back, in 1980s and 90s. 30 to 40 years back, this nation, our country, to fulfill our requirements, अपना देश का gold bonds तो बोलते हैं सोना, वर्ल्ड बैंक में देके वहां से पैसे लाया. Now, time changed. This nation was looked by the world. क्या no scientific development?
India was covered. Lot of loose cash, tremendous corruption. All of us, अभी भी है, बना है नहीं ऐसा नहीं बोल सकते. General, but there was a visionary man. There was a visionary leader who looked at the world and the nation and the country. His career to remove this, the only thing necessary is a loose cash to it. इसको खत्म करना चाहिए. All of us have been 8 o'clock on November 8 announcement came. 4 घंटे के बाद पैसा बंद. Demonetization. Millions of bank accounts are opened. Millions of bank accounts are opened. Few months. Jan-Dhan. Money goes directly to the banks. DBT system. Indian banking transaction system is the easiest in the world. A chai wala chai piएंगे, just take a cup of tea. पैसा देने की जरूरत नहीं है. अरे QR कोड लगाता है, स्कैन करो पैसा दे दो. कटिंग बार-बार शॉप पैसा देने की जरूरत नहीं है. कट कर दो. You go to a सब्जी वाला here, एक ऐसा लगता लगाता है. पैसा देने की जरूरत नहीं है. कितना पैसा हुआ? 11 रुपया हुआ. स्कैन करो 11 रुपया तक चला गया. What was India 75 years? What is India 70 now? Tremendous change. Top iron producing factories are managed by India. Brilliant, intelligent software companies are headed by India. Top scientific institutions are fueled by the think tanks of India. India was suffered losses in our fights, China war, Pakistan war, Bangladesh war, whatever it is. But now India's defense system is, people are afraid. डरता है. एक घंटा में जाएगा. क्या बोला उसको? What is that name? इतना क्या आ रहा है? What is it called? भूल गया. क्या बोला? Indian missiles are exported now. Nations are purchasing Indian missiles. One of the powerful nations producing defense technologies. What was India and what is India? Everywhere Indians, America started engaging 50 years back, 40 years back, 70 years back. People were, I should not use words such like, our prime ministers, our finance ministers, our home ministers were not getting appointment with the ministers in America, England and Germany. अभी वो लोग बुलाता है, अरे इंडियन प्राइम मिनिस्टर हमारे कंट्री को आओ ना. इंडियन होम मिनिस्टर प्लीज कम. फाइनेंस मिनिस्टर आइए. डिफेंस मिनिस्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है. लेट अस हैव डिस्कशन. व्हाट हैपेंड? इंडिया हैज स्ट्रेंथन्ड इटसेल्फ. हम भी है. अभी वो लोगों को इधर बुलाने की जरूरत है. वो हमको बुलाता है. When the Ukraine war is happening, all countries have noticed and called India, please have a discussion. अब बातचीत करो ना. That is India. अब थोड़ा सा बात करो. Sri Lanka crisis. Sri Lanka was in crisis. Who helped them? And who is helping them? फिर भी मेरा मुंह से ऐसा मत कहे. जो रोटी चावल दाल जो श्रीलंकन eating, it is supplied from the Indian nation.
So there is a driving force, there is a fueling force, there is energy. But the sleeping Leviathan has woken up. Swami Vivekananda ने कहा ना, arise, awake, stop not till the goal is reached. India has woken up, and there is one person, there is one leader. There are leaders everywhere now rising up to fuel the progress in the fight. A definition is put, a goal is fixed, a target is fixed, the purpose is fixed. 25 years के बाद, 50 साल के बाद मेरा भारत ऐसा होना चाहिए. Please remember, India will be crossing the 5 trillion mark in the GDP, 5 trillion mark in the financial transactions. When the leader of the nation said that 5 trillion, people laughed at it, joke किया, क्या करता है? 5 trillion is not enough, but now it has crossed 3.5. It pushed, it is number 6 now. And the World Statistics International Monetary Fund (IMF) has projected the next 25 years progress of the World Economic Forum. विश्व की इकोनॉमिक फोरम में क्या-क्या नेशंस आगे बढ़ेगा? Let us feel proud and गर्व. कहता है by 2027 India will be on the number 3 in the world. By 2040 it will be coming to the number 2. By 50 it will be the leading force in the world. Next 25 years, when India will be celebrating centenary of its freedom movement, which we should not call the PV, 100 साल का 2047 में नौजवान लोग जहाँ है, हम सब लोग हैं, हम देखेंगे पूरा भारत, अरे 50 साल पहले ऐसा था. Now मेरा भारत is number 1 in the world. It will push England down, it will push Japan down, it will push Germany down, it will push China down, and it will step above USA. This is the vision for it. It is not my words. International Monetary Fund, International Economic Forum puts it. आने वाला 25 साल में, it is the force of Indian economy which is moving forward. अभी dollar is controlling the world. 20-25 साल के बाद रुपया will be controlling the world. Indian industries, think tanks are there. ठीक है, तो what is sir और आप इस progress में, in this speed of, please remember, whether we do it or we don't do it, हम करेगा नहीं करेगा, सोचेगा नहीं सोचेगा, जानेगा नहीं जानेगा, whether we know it or don't know it, जब whether you are sleeping or awake, but the Indian Express is going forward. It's moving. It is put on the track. गाड़ी में बिठा दिया and it is on the course. What is my role? इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? What should be my role? I will give an example. एक बार कुछ हॉकी टीम्स हॉकी खेल रही थी. एक टीम जीत लिया. एग्जाम्पल इंडिया हॉकी मैच जीत लिया. जीतने के बाद सब लोग खुश हैं. अरे इंडिया जीत गया. सब लोग खुश था. सभी प्लेयर्स आर हैप्पी. वन प्लेयर वाज नॉट हैप्पी. वो रो रहा है. सब लोग जाकर पूछा, अरे क्यों रोता है यार, इंडिया ने जीत लिया. यू नो व्हाट ही सेड? पूरा 1.5 घंटा में, लिसन हिज आंसर, पूरा 1.5 घंटा में वो विनिंग बॉल को मेरा हॉकी स्टिक टच नहीं किया. इसलिए मैं रो रहा हूं. मैं जीत लिया, बट मेरा हॉकी स्टिक इस पर टच नहीं हुआ.
Vivekananda puts it beautifully. The secret of the greatness of a nation lies in organization. I will conclude with this. मैं इसे conclude करूँगा. Swami Vivekananda says, the greatness of a nation, the secret of the greatness of the nation lies in organization, accumulation of power, coordination of wills. We need to get organized. We need to power our accumulation of the powers. Means what? Accumulation of power means what? जहाँ जहाँ wherever there is a decision making process होता है, wherever people have to take a decision, उस deciding positions में visionaries बैठना चाहिए. Very important. जो भारत की भविष्य का दर्शन करेगा, ऐसा भविष्य भारत का दर्शन करने वाला निर्णयात्मक कुर्सी में बैठना चाहिए. Whether it's a clerk, whether it's a secretary, whether it's a LDC or HDC, or whether it's a chaprasi, or whether it's a security man. हर एक व्यक्ति जो काम करने के लिए है, भव्य भारत की दर्शन का दृष्टिकोण का व्यक्ति उस निर्णयात्मक सीट में है. That is very much necessary. उसके लिए जो लोग बैठा है, उसके अंदर भविष्य भारत की भव्यता का उसमें अंदर भरना चाहिए. Fill the future vision of India in their brains and minds. And the last thing Swami Vivekananda says is wonderfully, coordination of wills. मैं अभी एक 10-20 दिन से पूरा अरुणाचल का प्रवास में था. What was अरुणाचल प्रदेश 40 साल पहले और अभी अरुणाचल प्रदेश कैसा है? Wonderful progress, tremendous progress, excellent progress. हमारा जो बालकृष्ण जी, रेखा दीदी, ऐसा जो बड़े लोग जहाँ काम किए थे, वो लोग जब बोलते थे अरुणाचल प्रदेश ऐसा ऐसा है, अभी वो लोग बोलते हैं fantastic. This transformation बदल रहा है. इस बदल रहा हुआ चेहरा का पीछे कौन है इसके पीछे? Who is there behind? Visionaries of Arunachal Pradesh, powers of Arunachal Pradesh, decision makers of Arunachal Pradesh. But still, what बहुत कुछ करने का है. One thing which is needed for every nation, every state for its index is the growth is measured in the form of, one is in the form of transportation and communication. 30 साल 20 साल पहले ईटानगर से शायद गुवाहाटी जाने के लिए कितना समय पता नहीं है, कितना समय लगता था पता नहीं, बट आजकल शायद next year, maybe 2-3 months. When a flight comes here, you sit in the flight, 2 घंटा में गुवाहाटी पहुंचता है. Maybe 30 साल पहले दिल्ली जाने के लिए अरुणाचल प्रदेश से 10 दिन लगता होगा, अभी 4 घंटा में पहुंच जाए. Transformation, progress. But still, a lot is to be done. My feeling, my suggestion, my request for all the thinking faculty, the think tank of Itanagar, which is the center of decision making of Arunachal Pradesh, transportation system, the roads, the highways must be brilliant, fantastic. And the people who
पढ़े लिखे कमाई लोग जब अपना बस्तियों में जाएगा और लगेगा लोग क्या लेट अस नॉट फॉरगेट आवर रूट्स, अपना जड़ को भूलना चाहिए, अपना जड़ से हम कभी काटना नहीं चाहिए। We should never be cut from our roots, we should never be implanted away from our roots. This is our request and a beautiful think tank project India. Yes, Arunachal Pradesh is called the land of rising sun. And Arunachal Pradesh should become the land of rising India. It should be the land of rising India. What a wonderful herbal plants are there. There should be a revolution. Herbal medicine. There should be a revolution. Food processing industry in the entire India. There should be a revolution of floriculture industries in Arunachal Pradesh. And that is the new Arunachal. That should be the new India. And our role is in performing and regulating our responsibilities. Please remember, whether we do it or we don't do it, but it is sure that India is bound to be leading the whole world because the force enough जबरदस्त है कि धक्का लेके अपने फेस पे। A tsunami of power is behind. It is pushed India forward. सोना नहीं सोना चाहिए और सोने का भारत अपना सामने रहे, ऐसा स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण परमहंस और मां शारदा देवी को प्रार्थना करते हुए विवेकानंद केंद्र आपके साथ है। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी is with the people of Arunachal Pradesh, and let us make this beautiful land a great. At the end of the conclusion, being the Diwali, I extend my best wishes, Diwali greetings, Diwali pranams, happy Diwali to one and all. Namaste. Thank you. In fact, the deliberation of the speaker truly deserves an standing ovation. All of you. Stand. In fact, very thought-provoking, inspirational speech which I enlightened all of us. And in this next program going on, the interaction session, we have throughout the program for interaction session. Those who are having any ambiguity regarding the very concept of the topic of New India would like to interact with the next speaker and proceed. You can contribute, you can support. मेरा में slips है there, you can fill up the blanks, and that can be a good. आज के इस विषय को लेके किसी के मन में किसी कोई भी सवाल होता पूछ सकते हैं अभी, या केंद्र से रिलेटेड जानकारी जानना चाहते हैं, कुछ भी सवाल हो तो आपके मन में। मेरे ख्याल से सभी ने ध्यान से सुना है और पूरा विषय समझ लिया है, ऐसा लग रहा है। तो समय भैया
को आगे बढ़ाएं। So is there nobody for interaction session? Anyway, next proceeding to next program. It is part of agenda. May I call upon Dr. Karyakarta, who is the Assistant Professor of Government Degree College, Chimpu, to come over here and give the vote of thanks. नमस्कार। आज के इस विमर्श में जितने भी यहाँ भाग ले रहे हैं, मुझे विश्वास है कि आप सभी इस विमर्श कार्यक्रम से बहुत लाभान्वित हुए होंगे। माननीय हनुमंतराव जी के इस ओजस्वी और तेजस्वी वक्तव्य से आप सभी को लाभान्वित हुए होंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत लोगों का योगदान है। तो मैं इस धन्यवाद ज्ञापन से पहले मैं एक नया भारत क्या है इस पर मैं एक इंसिडेंट जोड़ना चाहूँगा। मैं एक इंटरव्यू देखा था इसका, हमारे जो होम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर का। तो वो बता रहे थे कि एक बार वो उनकी फैमिली अमेरिका में रहते हैं, तो उनका बेटा के साथ वो एक बार एक रेस्टोरेंट में गए चाय पीने के लिए। तो वहाँ गए तो वहाँ के रेस्टोरेंट वालों ने उन्हें कोविड का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने को कहा। तो उनका बेटा नहीं पढ़ता है, तो वो अपने पॉकेट से जेब से एक सर्टिफिकेट निकाला, कागज इस तरह से दिखाया और जयशंकर जी से उस रेस्टोरेंट वाले ने कहा कि आपका दिखाइए। तो जयशंकर ने अपना मोबाइल निकाल के दिखाया, ये तो डिजिटली उन्होंने दिखाया। तो उन्होंने कहा कि तब उनको पता चला कि ओ अमेरिका अभी तक वही है और हम कहाँ आगे चले गए। तो इससे पता चलता है कि हम अभी भारत सबसे आगे तो नहीं कह सकते, लेकिन किसी से कम भी नहीं है। तो यही नया भारत है। तो इसी नया भारत को और आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को किस तरह से अपना योगदान देना चाहिए और किस नजरिया के साथ, किस उद्देश्य के साथ हमें अपने जो कर्म क्षेत्र है आपका, जो जहाँ आप काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें किस तरह से आप योगदान दे सकते हैं, इस पर आज के हमारे इस कार्यक्रम के वक्ता माननीय हनुमंतराव जी ने बहुत ही सुंदर वक्तव्य दिया। तो उन्होंने विवेकानंद की नजरिए से भारत को कैसे महान बनाना चाहिए, इस पर बहुत ही सुंदर वक्तव्य दिया। उसके लिए माननीय हनुमंत जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। इसके बाद इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रांत संगठन विवेकानंद केंद्र रुपेश भैया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में उपस्थित अचितावार जी, चेयरमैन विवेकानंद अरुणज्योति केंद्र, आप भी यहाँ आए, अपना समय निकाल के, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में और इस जो भी आयोजन व्यवस्था यहाँ किया गया, उसकी देख रेख के लिए हमारे चिंपू के प्रिंसिपल
सर भी यहाँ उपस्थित थे, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ साथ जितने भी यहाँ आदरणीय महानुभावों जिन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इसमें अपने धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को, इस वक्तव्य को पूरी तरह से अंत तक सुने, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ से जाएंगे तो इस विमर्श में जो भी चर्चा की गई है इसको अपने जीवन में आत्मसात करके, अपने जीवन का हिस्सा बनाकर उसको अपने कार्यक्षेत्र में आप इसको जरूर मतलब उपयोग करने की कोशिश करेंगे और समाज में और देश को विकसित बनाने में अपना योगदान देंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ बीकेबी अलुमनाई एसोसिएशन के कुछ मेंबर्स भी हैं, तो आप भी यहाँ आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, तो आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीकेबी चिंपू के टीचर्स भी बहुत है यहाँ उपस्थित हैं, तो आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप जो अभी विमर्श में जो भी यहाँ चर्चा की गई थी इसको आप स्टूडेंट्स तक भी पहुँचाएंगे इस विचार को, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मीडिया फ्रेटर्निटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए। और अपने कार्यकर्ता बीकेबी अरुणज्योति के जितने भी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया बहुत दिनों से इस कार्यक्रम को बनाने के लिए, आप लोगों का बहुत मेहनत लगा, मैं देख पा रहा था कि आप लोगों की मेहनत को, और इस कार्यक्रम को इतना सुंदर बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ साथ आज के इस ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी शिवमसो भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया। और आज के एंकर डॉक्टर खुशबू सावियो मेरे ही मित्र हैं, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह से इस कार्यक्रम का संचालन किया। और इसी के साथ साथ जितने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी आशा के साथ हम इस धन्यवाद ज्ञापन को समाप्त करेंगे कि आप सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे और अपना योगदान देंगे एक नया भारत बनाने को, एक उत्तम भारत बनाने को, एक श्रेष्ठ भारत बनाने को। धन्यवाद। To proceed with next program, I would like to call upon students of Itanagar for Santi Mantra. Program comes to an end. Now in this, may I call upon BKB Academy members after the program is already ended. Now you can have a photo session with our today's speaker, Manani Hanumanta Raoji.